hello, welcome back to my YouTube channel that is Twinkling Tips. I hope you guys taking care of yourself, staying safe, staying healthy as always. और हम चले हैं वीकेंड के एक ट्रिप के लिए सुलाविनी आज. So I hope मैं आपको सारा डिटेल्स दे पाऊँ कि हमने जो प्रॉपर्टी ली है हम कहाँ पे जा रहे हैं. सो सुलाविनी आज इज़ इन नासिक. जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, वो त्र्यंबकेश्वर के आसपास ही है तो लोगों को वो ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा. वी आर स्टेइंग इन अ प्रॉपर्टी कॉल्ड बियॉन्ड बाय सोला एंड trust me guys, it is amazing. Like, I'm not just saying amazing, but trust me, it's beautiful. When you live in that property and you relax, you will feel it's completely different, close to the nature, close to the beauty. It's beautiful. So I'll take you through हमने जो प्रॉपर्टी ली है एंड हम कहाँ रह रहे हैं एंड एवरीथिंग. सो जब तक शिवम पार्किंग कर रहे हैं, आई थिंक वील डू द चेक इन एंड एवरीथिंग. So when you enter and you come to the reception, you get a glass of wine. Everybody gets it except the kids. So if you like it, that's a very nice thing for you guys. So we are done with the check-in from here, and we have this guide who is going to give us the complete guidance कि क्या process है 2 दिन का, how is the trip going to be, and what all other is there in the package that we have taken. So ऐसे ही सबके साथ होता है, मतलब irrespective whatever package you take or whatever you opt for, you get a guide like this. So there are 2 type of villas that they have. This is one, and what we opted is a different one. So let's see how it goes. This is really very beautiful. Only one restaurant in premises. Okay. Additionally, your package includes with the tour and testing, which is at this very. This human looks too good. Okay. So this was the lake view room, and we have taken a garden view room. So. Okay. And this is our lake view suite, basically, which comes with the 2 bedrooms. There's a lake there, and there we have come to our room. Nice. This is very nice. So finally we have come to our room, and this is how it is. So this is the garden view villa, and this is how the whole space is. So the best thing about this is that we have got a pool here directly. So this is how the view looks. This is completely how it is, and yeah, so this is how the whole thing is. Okay, I just realized that there is no mirror here. Okay, this is because it's my birthday on Sunday, 26th of May, so this is a little prep, and I'll show you guys the washroom. The best thing is everywhere it's like a lot of greenery, so that is one good thing. This is very nice, like seriously very nice. So by the way, this is the whole wine collection here that they have, and this is all the drinks and everything. Oh, they have Sleep Owl ka coffee, which is very nice. If you guys have not tasted Sleep Owl coffee, it's actually a very good coffee. These are all the collections that they have of their wine. This is again chargeable if you drink, so good for you. I don't drink. But yeah, the washroom is really very nice. Like, just see this, like it's all open, and these are all real. I mean, this is all real. So this is very good. I mean, I was just thinking there's no mirror, but then there's this huge mirror for me to get ready, which is very nice again. All right. So I know it's been a very long time we have not got, and बहुत delay हो रहा है vlogs में, but उतनी traveling भी नहीं हो रही है. After a very long time we are having this travel vlog. So I'll make sure I keep coming with such vlogs, but फिलहाल इसी के साथ we'll do. And I'll show you guys कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं. यहाँ पे हम
वी आर गोइंग टुडे टू सुला वाइन टेस्टिंग एंड वहाँ पे जो भी होता है आई ऑल्सो डोंट नो, तो वहाँ जाके पता चलेगा एग्जैक्टली. एंड उसके बाद कल हम कहाँ जा रहे हैं, लेट यू गाइज नो. बट दैट इज इट. एंड व्हाट्स दिस? ओके, देयर अ बाथरूम, लॉकर. Very nice, very nice. I mean, 10 on 10 property. Seriously. So it's a complete 10 on 10 property. So bye bye for now. See you guys later. Okay, so हमने कर लिया आराम. We had our lunch. It's 5 o'clock now और अब हम जा रहे हैं सुला विनयार्ड्स. वहाँ पे टेस्टिंग होगी वाइन की और उसके बाद we'll get to see the sunset and everything. So stay tuned. I'll go there and show you guys the sunset and how the whole process is, how the whole testing is. Just to give an update, anybody looking for a villa at Sula Vineyards, Beyond by Sula is the best place. Trust me, it is one of the I could say prime villas here because I have seen ample of them, but the kind of rooms that they have and everything, it's 10 on 10. The service is 10 on 10. The food is 10 on 10. So yeah. So of course, if I talk about the costs and everything, it also differs from season to season. I mean, of course, I feel this is May month and there's of course vacation is on peak. So I think the prices goes high, but you can check out their website as well as on Make My Trip or Agoda. So yeah, stay tuned. एंड हम पहुंच गए हैं सुला विनयार्ड्स. इट्स रियली वेरी नाइस. सो यहाँ पे होटल के थ्रू, अगर आप होटल के थ्रू आ रहे हो डायरेक्टली तो यहाँ पे रिजर्वेशन अलाउ वो पहले से ही कर देंगे और फ्यू पीपल कम डायरेक्टली टू सुला विनयार्ड्स इटसेल्फ. काफ़ी सुंदर है, काफ़ी क्लीन है. काफ़ी लोग यहाँ पे ना डायरेक्टली आए हुए हैं, मतलब होटल्स एंड ऑल में स्टे नहीं, डायरेक्टली सुला विनयार्ड्स आए एंड दे हैव टेकन द होल टूर टेस्टिंग. So there is this session that we have, so we are sitting here. It's all in batches actually. So I think वो कोई मूवी देख रही है यहाँ पे. So here it was all wines for mixturing and everything was done here. And after that here it was the coolest place and literally शिमला वाली feeling आ रही थी क्योंकि यहाँ पे पूरा storage हो रहा था वाइन का. My left to the right, okay. And what is this glass known as? Wine glass. A wine glass or stemware. It contains of 3 components: the base, stem, and the fourth wine. Please do not disturb your glasses. All the glasses to be on platform. वरना बोलोगे वेद ने दारू पीने बोला है. Alcohol is injurious to health. To explain, okay. Rasa is Rasa Cabernet Sauvignon, a very beautiful grape variety to make a red wine from. Tell you later. Please wait. Sniff this wine. The people got the wine. Sniff this wine. You can smell lychees, rose petals, right? Yes. Sniff this wine. Savor this wine. That's the last wine of the day. The name is. Alcohol is 8.5%, but sugar in this wine is 95 grams per liter. Okay, everyone, there's a small announcement. We are concluding. और हमने कर ली थी पांचों वाइन की टेस्टिंग और चले गए थे टॉप फ्लोर पे. मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा कोई भी वाइन. इफ़ यू गाइज आर वाइन लवर, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट फॉर यू गाइज. एंड वी केम टू द टॉप फ्लोर टू बेसिकली एन्जॉय द सनसेट. रिलैक्स होने आए थे. बहुत ग्रीनरी है, यू गाइज कैन सी.
बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ बनाए थे जहाँ पे यू गैस कैन जस्ट गो एंड क्लिक एज मैनी पिक्चर्स एज यू वांट। यू गैस कैन सी दिस इन द वीडियो एज वेल कि ऐसे छोटे छोटे ना ऐसे मतलब सेक्शंस बनाए थे, बिकॉज वो उसके वजह से वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड वो सनसेट वहाँ पे आप सबको दिख सकता है। सो इट ओवरऑल आई कुड से it's beautiful, it's clean. I think that is very important thing. And Cookie is capturing me, so yeah, I think that's more important कि क्लीन रहे जगह। एंड ये हम वहाँ से निकल रहे थे, वहाँ पे एक एरिया था जहाँ पे ये एक और ये रेस्टोरेंट टाइप का एरिया है जहाँ पे यू गाइस कैन एन्जॉय योर मील। सो दिस इज़ इट। एंड आई थिंक आप जितनी जल्दी जाओगे सुला विन्यास उतना अच्छा है। यू गेट टू एन्जॉय योर सनसेट। आपको थोड़ा सा शाम को टाइम मिलता है ऑन दैट टॉप रूफ। एंड फिर लेट इवनिंग इफ़ यू सी, फिर ऐसे यहाँ पे ना लाइट्स जल जाते हैं जो पहले आपको नहीं दिखेगा, बट देन आई थिंक पोस्ट 7 o'clock यू विल स्टार्ट सीइंग ऑल ऑफ दीज लाइट्स। तो हमने तो खूब सारे फ़ोटोज़ लिए। सो यू गाइस कैन चेक आउट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल। और ये है अगली सुबह। आई जस्ट थॉट टू कैप्चर इट एंड शो यू गाइस बिकॉज मुझे ये मिस नहीं करना था। बहुत प्यारा लग रहा था, आई मीन चिड़ियों की आवाज़ आ रही है मुझे, और ये प्लांट आपके घर के बाहर है। सो ये सारा कुछ इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति। कम टू हैव अ ब्रेकफास्ट। देयर इज इडली, सांबर, एंड वी हैव वड़ा पाव एंड मिसल। There is idli, there is ragi and normal idli as well. There is chicken stew, sambar. So the collection that they have is really very nice. Corn cheese paratha, stuffed mushroom. Of course, there's cornflakes, juices, fresh fruits. So yeah. So we have ordered dosa as well. So let's start with the breakfast with a good view. This is mine. Dosa is still coming. So let's see. Let's have our breakfast. And I've got the dosa. Everybody knows कि मुझे डोसा कितना पसंद है, and it's actually yummy. Full अमूल बटर में बनाया हुआ है. Try this. अच्छा है. The food is really good. वड़ा is actually good. मैंने try किया. एंड ब्रेकफास्ट एंड ऑल करने के बाद वी रिलैक्स, वी हैड सम वहाँ पे गेमिंग सेशंस थे, वो सब किया। फिर उसके बाद शाम को हम चले गए। मैंने आपको पहले दिखाया था कि वहाँ पे एक लेक था। सो वी जस्ट केम टू दिस लेक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन सी, दीज ऑल टमेटोज़। तो बहुत सारी फार्मिंग थी यहाँ पे टमेटोज़ के, ऑफ कोर्स बहुत सारी वेजिटेबल्स, ब्रिंजॉल एंड कॉलीफ्लावर, बहुत सारा कुछ। एंड इट वाज सो रिलैक्सिंग, as I always said in this vlog, because you feel so connected to your nature and so close to the beauty. Actually, it's good to get your kids here. I would always suggest, get your kids here. So yeah, you can see the view. And there we leave from this hotel, and a must visit place. Very nice place, very nice place. Good food, good people, good stay. Complete 10 on 10. Trust me guys, if you want to spend your weekend relax mein hoke, this is the best place to visit, beyond by Sula.
एंड हमें एक फ्री बॉटल वाइन की भी मिली. सो दैट इज़ देयर न्यू, I think they have come up with a new product in wine outlet. I think वो भी हमें complimentary मिला. This is it. I hope you guys like this vlog, and if you guys have liked it, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Twinkling Tips. So stay tuned, and I'll be coming with more such travel vlogs. Do follow my Instagram page, that is Twinkling Tips, and stay connected, stay healthy, stay safe. Bye bye.